Hello everyone, welcome to today's lecture on electoral reforms in India. भारत में चुनाव सुधार. Electoral reforms are essential to ensure the integrity and fairness of electoral process, which is the backbone of any democracy. देखिए, समय के साथ साथ बदलाव समय की जरूरतें होती हैं और सेम एज इट इज इलेक्शन प्रोसेस हमारी डेमोक्रेसी का बैकबोन है. नाउ सम क्वेश्चंस इसमें जनरेट हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स स्ट्रेंथ्स इंडिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस? क्या चुनाव सुधार भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं? कैन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स truly create a level playing field for all candidates and strengthens India democratic process? क्या चुनाव सुधार वास्तव में सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध करा सकते हैं और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं? Ever since the first general election was held in India in 1951-52, the country's electoral system has evolved and matured as a result of several attempts towards electoral reforms, with one nation, one election being the latest attempt. Now generate questions. What are electoral reforms? Electoral reforms refers to the changes made to the electoral process to improve its effectiveness, transparency and accountability. These reforms aim to address issues such as electoral malpractices, voter disenfranchisement and unequal representation. The electoral reforms seek to uphold the integrity and transparency of the electoral system by creating an environment that is free from manipulation, money and muscle power and aligned with the democratic values and principle of fairness and justice. Nonetheless, it was observed that after independence, some political parties neglected key issues in the first three general elections and rather indulged in the spreading lies and misinformation. As a result, some freedom fighters and many others became disillusioned with the electoral process. गांधीयन अप्रोच टू पॉलिटिक्स. हमारे यहां जो है गांधीयन विचारधारा पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित की? इन द 1950 द प्रिविलेंस ऑफ illiteracy, corruption, cost-based politics, booth capturing and lack of advanced technology were some of the challenges faced on institutions like the Election Commission of India in enforcing election rules. In the late 1970s, a movement called Sampurna Kranti or Total Revolution was launched to bring the country's politics back on track. However, on June 25, 1975, an emergency was proclaimed, which lasted till March 21, 1977. This period highlighted how, contrary to the vision of the Constituent Assembly, founders' debate and discussions were stifled in independent India. Candidates seemed more interested in securing seats in the Legislative Assembly and Parliament than in addressing key issues. The question remains, do the candidates follow Mohandas Karamchand Gandhi's ethics-based approach, where the means justify the ends, or do they adopt Niccolo? Machiavelli's idea
where the ends justify the means. In order to promote the Gandhian approach to politics, committee was formed to reform the election process in India. Electoral reform since independence. The Election Commission of India attempted to address these issues and introduced changes in the election process such as the Model Code of Conduct. First is Model Code of Conduct. According to the ECI book, Leap of Faith, the Model Code of Conduct was first introduced during the 1960s Kerala Assembly elections, when the government attempted to develop a code of conduct for the political parties. The body initially released a model of code of conduct under the title Minimum Code of Conduct during the midterm elections on September 26, 1968. Since then, it has undergone several revisions with major updates made in 1979, 1982, 1991 and 2013. ECI की पुस्तक, देखिए इसका मतलब यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की पुस्तक लीप ऑफ फेथ के अनुसार आदर्श आचार संहिता फर्स्ट टाइम 1960 के केरल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के दौरान पेश की गई थी, जब गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट विकसित करने का प्रयास किया था। तो सिस्टम ने पहली बार 26 सितंबर 1968 को मध्यावधि चुनावों के दौरान न्यूनतम आचार संहिता टॉपिक के तहत आदर्श आचार संहिता जारी की थी, और तब से इसमें कई अमेंडमेंट हुए, जैसे कि 1979 में, 1982 में, 1991 में एंड 2013 में मुख्य रूप से अपडेट किए गए। कमेटीज एंड रिपोर्ट्स, moreover, several committees have been instrumental in proposing reforms to addressing the challenges in the electoral process. Some of the key reports included those by the Tarkunde Committee 1975, the Dinesh Goswami Committee 1990 and the Indrajit Gupta Committee 1998. अर्थात इन सभी चुनावी प्रक्रिया में चुनौतियों के समाधानों के लिए कई कमेटियों का गठन किया गया। उन कमेटियों ने इसमें कभी महती भूमिका निभाई, जैसे तारकुंडे कमेटी 1975 में, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 की रिपोर्टें भी शामिल हैं। This committee recommended significant reforms to ensure free and fair elections. Some of them have already been implemented, such as mandating the disclosure of candidates' financial, educational and criminal backgrounds, lowering the voting age from 21 to 18, introducing electronic voting machines and increasing security. However, despite these reforms, the former Chief Election Commissioner have identified 4 major problems that continue to affect India's free and fair elections. These are the 4 M's: muscle power, money power, violation of the model code of conduct and misinformation. ये देखिए कमेटी ने 4 मेजर प्रॉब्लम्स को चिन्हित किए। अर्थात मसल पावर क्या है, क्योंकि देखिए भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना और चुनाव कराने के दौरान क्या संभावित समस्याएं आती हैं, उनमें से एक था मसल पावर, यानी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट का प्रभाव या हिंसक तरीकों का उपयोग, जिससे मतदाताओं को डराया जा सके, धमकाया जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है। मनी पावर का मतलब यह है कि जो कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, रिच होते हैं, तो धनी उम्मीदवार और पार्टियों का असामान्य लाभ, जिससे भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन,
सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी या भ्रामक जानकारी का प्रसार करना जिससे जनमत को प्रभावित किया जा सके और इलेक्शन प्रोसेस में विश्वास कम हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन जिससे कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों का उल्लंघन होता है। और इन सभी चैलेंजेस के समाधान के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है ताकि हमारी भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता बनी रहे। यद्यपि यह कोई नई बात नहीं है, फिर भी सवाल यह है कि अनेक रिफॉर्म्स के बावजूद इनका भारत के चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देन वोहरा कमेटी, इसके बाद देखिए रिफॉर्म्स के तहत दो अलग अलग कमेटियां बनी, बोहरा कमेटी और टीएन सेशन। बोहरा कमेटी ने भी रिफॉर्म्स के लिए क्या रिफॉर्म किए? द बोहरा कमेटी चेयर्ड बाय फार्मर होम सेक्रेटरी एन वोहरा was established by the P.V. Narasimha Rao government in July 1993. The committee looked into the criminalization of politics and the connections between Indian officials, politicians and criminals. It submitted its report on October 1993. The report highlighted how this network was running a parallel government and revealed the patronage criminals received from politicians across parties as well as protection from government functionaries. It was further revealed over the years that individuals with criminal backgrounds were elected to local bodies, state legislative assemblies, and even parliament. The network has affected India's democratic process, yet it has been difficult to dismantle it. Therefore, just as some freedom fighters in independent India felt delusioned by the behavior of political parties, a similar sentiment was also seen among the voters. And Mugulika Banerjee, an anthropologist and author of Why India Vote, highlighted this feeling. She pointed out that in a country divided by social inequality, election day offers rare experience of equality. According to Banerjee, by pressing the button, I proved that I exist even if nothing in government policy seems to remember that people like me exist. The real issue here is the faith in democracy, which is threatened by the influence of money in the election process. How can the state effectively control the power of money in elections? Next is TN session reforms. There are instances of electoral fraud such as musclemen often capture polling booths and stuff ballot boxes with votes marked in the name of their candidates. Even there are reports of voter intimidation, bribery, and bogus voting on the name of individuals who are not physically present. Despite these challenges, it can be said that the overall faith in the electoral process has grown, particularly due to the efforts of TN Session, India's 10th Chief Election Commissioner. Between 1990 and 1996, TN Session implemented many electoral reforms that changed the face of Indian elections. He dispatched central police forces to polling stations to prevent ballot tampering, introduced voter photo ID card, enforced spending limits, and went after politicians who attempted to bribe
or intimidate voters. Session even made candidates remove illegal electoral graffiti. Most importantly, he asserted the autonomy of the Election Commission of India in a way no commissioner had done before, even through politicians accused him of arrogance and tried to undermine his authority. However, one key issue remains: how has the increasing role of money in politics affected the quality of candidates running for public office, and what risk does this pose to democracy? State funding of elections. The address the issues of excessive election spending, the Indrajit Gupta Committee 1998 was formed. The committee proposed state funding of elections, arguing that there was full justification, constitutional, legal, and in the public interest for the measure to level the playing field, particularly for parties with limited financial resources. The committee also recommended two key limitations on state funding. Firstly, state funds should only be provided to national and state parties that have been allocated a symbol and not to independent candidates. Secondly, in the short term, state funding should be offered in kind in the form of specific facilities to recognize political parties and their candidates in state direct monetary support. The committee also noted that the economic situation of the country only suited partial and not full state funding of elections. However, the 1999 Law Commission of India report concluded that total state funding of elections desirable so long as political parties are prohibited from taking funds from other sources. But the commission also concurred with the Indrajit Gupta committee that only partial state funding was possible given the economic condition of the country at the time. Additionally, it strongly recommended that an appropriate regulatory framework be established for political parties, ensuring internal democracy, internal structures, and the maintenance and auditing of accounts and submission to the ECI before state funding of elections could be considered. The report, Ethics in Governance of the Second Administrative Reform Commission 2008, also recommended partial state funding to reduce illegitimate and unnecessary funding in election expenses. Similarly, the National Commission to Review the Working of the Constitution 2001 did not endorse state funding of elections but concurred with the 1999 Law Commission report, emphasizing that the appropriate framework for the regulation of political parties should first be in place before state funding is considered. Now, going to discuss इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अभी देखिए, विगत महीनों में चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिशियंस द्वारा ये चुनावी बॉन्ड काफी चर्चा में रहा और इस पर कई डिबेट भी आपने टेलीविजन चैनलों में देखा होगा। इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे रहे। यद्यपि इस बॉन्ड का सभी पॉलिटिकल पार्टियां यूज करती हैं, तो एक आमजन के मन में
ये जागरूकता निश्चित रूप से होनी चाहिए कि चुनावी बॉन्ड क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इसमें हम एनॉनमस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द डोनेटिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मीन्स एनॉनमस anonymous financial instruments for donating to political parties। अर्थात चुनावी बॉन्ड जो है राजनीतिक दलों को दान देने के लिए गुमनाम वित्तीय साधन है। सीधा शॉर्ट आप समझिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको दान देने के लिए गुमनाम वित्तीय साधन है। मतलब क्या है कि गुमनाम मतलब जो ज्यादा ना लोग जान सके समझ सके, यानी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति या बड़े ट्रस्ट वाले होते हैं, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जिस पॉलिटिकल पार्टी पर विश्वास होता है, जिसकी आइडियोलॉजीज को पसंद करते हैं, तो उस पार्टी को डोनेशन के रूप में देते हैं, चंदे के रूप में। अब हम बात ये करेंगे इसकी फीचर्स क्या है। बियरर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है धारक साधन। सेकेंड इज एनॉनमस डोनेशंस। एनॉनमस डोनेशंस का मतलब होता है गुमनाम दान। थर्ड इज टैक्स डिडक्टिबल। टैक्स डिडक्टिबल का मतलब होता है कर कटौती योग्य। एंड नेक्स्ट इज फिक्स्ड वैलिडिटी पीरियड, यानी निश्चित वैधता अवधि। एंड लास्ट इज अवेलेबल इन द वेरियस डिनोमिनेशंस, मीन्स विभिन्न मूल्य वर्ग में उपलब्ध। में उपलब्ध। तो अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बियरर इंस्ट्रूमेंट्स announced in 2017 and notified in 2018 to cleanse the system of political funding. However, the anonymity of these bonds undermined the principle of transparency in political finance, as neither the donor nor the political party was required to reveal the source of funding. The lack of transparency left voters in the dark about the sources of funding that political parties used to influence elections. Therefore, the Supreme Court of India struck down the electoral bonds scheme of anonymous political funding before the 2024 general elections. In order to shift from the ends justify the means to the means justify the ends approach, political parties need to support the functioning of the Election Commission of India, internal democracy within parties, and transparent criteria for selecting candidates are essential parts of this process. Additionally, open debate among political parties and contesting candidates may be organized in ways it happens in countries like the United States. The ECI may also learn from TN session
who significantly reforms the election process. However, with the rising concern over money power, the criminalization of politics, and media influence, the question remains, can electoral reform truly create a level playing field for all candidates, and what more needs to be done to strengthen India's democratic process, to restore faith in the democratic process? In these lectures, से रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर भी यदि हम नजर डालें तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हाउ डिड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इन 1975 how did the proclamation of the emergency in 1975 demonstrate a departure from the vision of open debate and the discussion in the independent India as envisioned by the Constituent Assembly founders? मतलब यह हुआ कि 1975 में इमरजेंसी की घोषणा किस प्रकार संविधान सभा के संस्थापकों द्वारा स्वतंत्र भारत में खुली बहस और चर्चा की परिकल्पना से विचलन को प्रदर्शित करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड एज द मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट इन 1968 evolved over time, and what role has to play in prompting fair elections in India? Important means आदर्श आचार संहिता, जिसे 1968 में न्यूनतम आचार संहिता के रूप में शुरू किया गया था और समय के साथ किस प्रकार विकसित हुआ तथा भारत में निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने में इसने क्या भूमिका निभाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एनालाइज द मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिक्स of the recommendation of various committees. विभिन्न कमेटीज की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए प्रमुख चुनावी सुधारों का संक्षिप्त में विश्लेषण कीजिए. नेक्स्ट इज द बोहरा कमेटी रिपोर्ट हाईलाइटेड द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवैल्यूएट इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम. मीन्स 1990 एंड 1996 के बीच टीएन सेशन के चुनाव सुधारों के भारत के चुनाव आयोग की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली पर प्रभाव का मूल्यांकन करें. तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि लिखा हुआ इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ टीएन सेशंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिटवीन 1990 एंड 1996 इन द ऑटोनॉमी एंड फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Thank you.